Hello student, today we are going to start chapter number 6, subsidiary books. Subsidiary books, then the main book is first book is known as general entry. We know very well, we completed the chapters general entry. When there are a large number of transactions in business, the business prepares some other books. It is known as subsidiary books. जब भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो एक ही बुक में मेंटेन करना टफ है. सो कंपनी प्रिपेयर कर रही है सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो. And also some limitations are there in generals. First one, while writing every transactions, the account name has to be mentioned. Number two, an individual posting of each account has debit and credit and hence involves the repetitive generalizings and posting work. The general becomes bulky and voluminous and becomes difficult to manage. Such accounting systems does not provide the informations on a prompt basis. It becomes very difficult to implement effective internal control system. In order to overcome these limitations, the general is subdivided into subsidiary books. Because of the use of computers, these limitations have been neutralized. For the large number of transactions which are repetitive, a separate books of a generals is kept for example, for the credit purchase of credit sales, credit purchase for credit sales, cash sales, etc. Specific transactions are noted in the specific books. Such separate books of generals are known as subsidiary books. So, now meaning of subsidiary books. Meaning of subsidiary books. Subsidiary books refer to a generals kept for a specific transactions of the similar nature. एंड सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स है और बार बार उसका रिपीटेशन ना हो, उसलिए एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक स्पेस पे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड subsidiary books. Subsidiary books are also known as a day book. A separate book for each subdivision is maintained. For example, for recording all credit purchase transactions, purchase book is prepared. For recording all the credit sales transactions, sales book is prepared. The same way, for recording the bills receivables drawn or bills payable accepted, or then purchase return, then sales return, then cash transactions and general purpose. So first we'll discuss the types of subsidiary books. Types of subsidiary books. So simple. First is cash book. Second one, goods subsidiary books.
और इन दिस चैप्टर्स वी लर्न द गुड्स सब्सिडरी बुक्स। ये चैप्टर में गुड्स सब्सिडरी बुक्स स्टडी करने हैं। सो फर्स्ट परचेज बुक, सेकंड वन सेल्स बुक, थर्ड वन परचेज रिटर्न बुक, and fourth one sales return book. सिंपल एंड शॉर्ट समझना हो तो परचेज बुक इज प्रिपेयर फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शंस। सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शंस। परचेज रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। And sales return book purchase of recording all the sales return of goods। तो बहुत ही सिंपल है, तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 6। नाउ थर्ड वन, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स। पूरा एक चैप्टर है यहाँ पे, सब्सिडियरी बुक्स फॉर बिल्स एंड 4 नंबर। देन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बिल्स रिसीवेबल बुक, bills receivable book and bills payable book, and next journal proper। सिंपल। एक फर्स्ट कैश बुक है। कैश बुक में पॉइंट है 1 कॉलमनर कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक एंड 3 कॉलमनर कैश बुक। देन सब्सिडरी बुक्स, गुड्स सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। एंड सब्सिडरी बुक्स फॉर द बिल्स है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेएबल। और जनरल प्रॉपर लास्ट में। सो एक्चुअली सपोज हम देखने जाएं तो सब्सिडरी बुक्स हमारा चैप्टर नंबर, यानी सब्सिडरी बुक्स गुड्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर पूरा 6 है। तो चैप्टर 6 कवर्स दी सब्सिडरी बुक्स यानी कि ऑफ गुड्स। देन चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा हमारा कैश बुक कवर करने वाला है। पेटी कैश है, सिंपल कैश बुक है, कॉलमनर कैश बुक है। एंड चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा जनरल प्रॉपर है, पूरी जनरल प्रॉपर्स के सभी पॉइंट्स को कवर कर रहा है। और सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स है वो पार्ट 2 में, वो हमारा पार्ट 2। सो यहाँ पे 3 चैप्टर्स है सब्सिडरी बुक्स में ही। पार्ट 1 में 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8। सो विल डिस्कस 1 by 1 चैप्टर 6, 7 और 8। दैट इज वी कैन से इट्स अ सब्सिडरी बुक्स। सभी सब्सिडरी बुक्स के रिलेटेड चैप्टर्स हैं। सो विल सी 1 by 1। फर्स्ट विल complete the goods subsidiary books, purchase book, sales book, purchase return and sales return। So subsidiary books for goods, the types of goods subsidiary books,
विल डिस्कस द परचेज बुक सिंपली। फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, तो परचेज बुक परचेज बुक परचेज बुक। तो परचेज बुक को मीन्स डिटेल में देखेंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट्स परचेज बुक। तो सिंपल परचेज बुक एंड सेकंड है कॉलमनर परचेज बुक। Purchase book with the column according to types of goods. Purchase book with column according to types of goods. To types of goods and goods and expense columnar purchase book. So simple purchase book and columnar purchase book. In columnar there are two types of column, and one column for the according to types of goods and the one column for the goods and expense column. So purchase book with the columns according to types of goods and goods and expense columnar purchase book. So we'll discuss one by one in detail. Today we'll discuss the simple purchase book. So point to be kept in mind, purchase book simple purchase book चाहे सिंपल हो या कॉलमनर, एनी परचेज बुक्स आर देयर। तो इन परचेज बुक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ओनली, एक लाइन में सब कुछ कवर कर लेते हैं, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर recorded in the books. Only credit purchase of goods are recorded in the books. सिर्फ credit purchase of goods are recorded. Only credit purchase को ही हम record करेंगे, और वो भी only goods, not assets. That means अब ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, एंड सेकंड थिंग्स assets purchase is not recorded. It means only
only the credit purchase of good, only the credit purchase of goods is recorded, only the credit purchase of goods is recorded. Cash transaction is not recorded. Expense transactions is also not recorded. इवन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो भी रिकॉर्डेड नहीं होने वाला है. ओनली ऑन ओनली गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो और वो भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन दी सब्सिडरी बुक्स, चाहे वो सिंपल बुक है या फिर कॉलमनर बुक्स. नाउ विल सी दी सिंपल परचेज बुक. Now let's prepare the date, name of supplier, inward, invoice number, LF number and amount rupees. Purchase book of Sri so and so. तो ये स्पेसिमेन है, नॉर्मल सिंपल परचेज बुक की स्पेसिमेन है कि परचेज बुक ऑफ श्री सो एंड सो फ्रॉम डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, inward invoice number, LF number and amount rupees. We know very well only the credit purchase of goods are recorded. So let's we see one by one transactions, discuss and record. See the page number 151 in your textbook. Page number 151 in your textbook. Exercise sum number 4. Prepare the purchase book in the books of Sri Suresh. Purchase book of Sri Suresh. 2015 October 1st purchase goods of 10,000 from Deepak on 1 month credit. तो ये है मीन्स 1 month credit, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इसने गुड्स परचेज किया है, परचेज वर्ड मेंशन किया है, दैट मीन्स द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. सो द ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक. Purchase goods of 20,000 from Sardar stores at 10% trade discount. Invoice number 116. तो same way, name of the supplier is given Sardar store, 10% trade discount, and but what cash is not mentioned. So that's a credit purchase of goods. So it's also recorded. Purchase goods of 18,000 from Pankaj on कैश. कैश में रिकॉर्ड किया है.
तो कैश ट्रांजेक्शन्स इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इट मीन्स नॉट रिकॉर्डेड इन अ सब्सिडरी बुक एंड इट्स रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक. उसे कौन सी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक में. प्लेस्ड ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो सी प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर दैट्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. ये कैसा ट्रांजेक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर. आगे नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा. परचेज फर्नीचर ऑफ 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट. क्रेडिट मेंशन किया है बट दैट्स अ फर्नीचर है, यानी कि असेट्स है, और असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर and sent invoice number 350 after adding ₹1,000 for the railway freight. राजेश हैज सेंट गुड्स, राजेश ने मीन्स गुड्स बेच दिया यानी हमने परचेज किया है. राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर, हमने यहाँ पे जो ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग गुड्स आ गया है, यानी 20,000 रुपीज़ का गुड्स एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग ₹1,000 फॉर रेलवे फ्रेट. और रेलवे फ्रेट के 1,000 रुपीज़ उसमें ऐड करके भेज दिया. सो क्रेडिट परचेज है हमारे लिए, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे. परचेज गुड्स ऑफ 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट. नेम ऑफ पर्सन इज नॉट मेंशन, नेम ऑफ पर्सन इज नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन है. तो कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक. सी द परचेज गुड्स ऑफ 14,000. First we have to decide the transaction is cash or credit, or also mention the 5% cash discount is there. So it's a cash transaction, it's recorded in a cash book. It means in another subsidiary books. Purchased goods of 30,000 from Nilesh at 10% trade discount and half of the amount paid immediately by check. Yes, ये एक important topic है. If the transactions, if the half transaction is cash and half transaction is credit, to consider the whole transaction as a credit transactions and record in the subsidiary books. So 1, 2, 3 and 4 transactions सिर्फ record होने वाले हैं, बाकी सभी transaction नहीं. तो चेक कर लेते हैं, मीन्स 1 by 1 कैसे record करना है वो. So first important point एक record यहाँ भी कर लेते हैं notes में कि if the transaction is half, if half transaction is cash and half transaction is credit, in this case consider the transaction, consider the whole transaction as credit transaction. And record in subsidiary book. और उसे सब्सिडरी बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट वन. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस इन बुक 1 by 1. फर्स्ट वन 2015 अक्टूबर. फर्स्ट परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 month क्रेडिट. सो सिंपल. जनरल एंट्री क्या है उसकी, जनरल एंट्री हम चेक करने जाए तो इजीली पता चल रहा है कि गुड्स परचेज किया है. सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स परचेज किससे किया है हमने, दीपक, तो टू दीपक अकाउंट, और अमाउंट है यहाँ पे 10,000.
तो सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दीपक अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो ये लेजर पोस्टिंग करेंगे, जिससे पोस्टिंग वाला चैप्टर यानी टॉपिक तुमने नहीं किया अभी तक। बट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दीपक अकाउंट, तो दीपक सप्लायर है, तो नेम ऑफ द सप्लायर्स इज रिकॉर्डेड इन दी पर्टिकुलर्स कॉलम में। तो यहाँ पे वन बाय वन सभी के मीन्स हम रिकॉर्ड्स करते जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो दीपक अकाउंट नो इनवॉइस नंबर कोई नहीं दिया हुआ है, सो डैश LF नहीं है, और अमाउंट 10,000। नेक्स्ट वन, on 3rd October purchase goods of 20,000 from Sardar stores at 10% trade discount, invoice number 116. Second, Sardar stores account 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया है, समझ लेना, और 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000, so 18,000 is recorded. Trade discount is not recorded in the books, that's why only the 18,000 is recorded. So Sardar stores invoice number 116 और amount 18,000. नेक्स्ट 3rd डेट पर है, नेक्स्ट डेट है हमारी 21st। राजेश है सेंड गुड्स एज पर ऑर्डर, तो वो चेक करते हैं कि राजेश को हमने कितना ऑर्डर दिया है। देन प्लेस्ड ऑर्डर विथ राजेश टू सप्लाई गुड्स ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 रुपीज़ गुड्स और 10% ट्रेड डिस्काउंट, that means 18,000. And one important things, railway freight is paid, but it is recorded in the subsidiary book of in a general proper, not in a goods related, that's expense. तो एक्सपेंस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। सो रेलवे फ्रेट इज नॉट रिकॉर्डेड, सो राजेश हैज सेंड गुड्स एज पर ऑर्डर and sent invoice number 350 after adding rupees 1,000 for railway freights. So simple, Rajesh account invoice number 350 and total amount है 18,000। और नेक्स्ट 25 परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, तो वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो 30,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 3,000 रुपीज़, तो टोटल 27,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज हुआ है फ्रॉम नीलेश। सो सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नीलेश अकाउंट। और अमाउंट है 27,000 and that's a purchase goods from Nitin. So Nitin account बुक में बैक साइड पर ट्रांजेक्शन है, वो चेक कर लो। इनवॉइस नंबर 151 एंड 40,000, तो 1,13,000 दैट्स आंसर। सो बहुत इजी है, आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।